Hello, my dear students. Welcome to mathematics class with your Ashu ma'am. Dear students, we are doing Unit 7 Triangles of your NCERT book and we are running 7.2 exercise. In my previous video, I taught you that in an isosceles triangle in which any two sides are equal, then the angles opposite to the equal sides are also equal, and vice versa also. That means in a triangle, if two angles are equal, then the sides opposite to the two angles are also equal. And we have done first question of 7.2 exercise in our previous video. Now let's start with question number 2. Dear students, question number 2 says that in triangle ABC, AD is perpendicular, means it is 90 degree, and also bisector means dividing two equal parts of BC. If it is perpendicular as well as bisector, that means it is making 90 angle with BC as well as dividing BC into two equal parts, that is BD is equal to DC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle with the sides AB is equal to AC. So dear students, first of all, we have been given this triangle ABC in which AD is perpendicular to BC, means this and this, both the angles are 90 degree, and as also it is a bisector, that bi means two, sector means equal parts, means this line at this point dividing this BC in two equal parts also, means BD is equal to DC. So these are the things given to us: AD perpendicular to BC and BD is equal to DC. We need to prove that this bigger triangle ABC is isosceles with the sides AB is equal to AC. Means these two sides we need to prove equal. Now we can see that if I'll prove that these two smaller triangles congruent, from there we can get angle B is equal to angle C. By CPCT मिल सकता है हमें. और उसके बाद अगर मैं ये रब कर दूं तो ये बी और सी एंगल किसका हिस्सा बन जाएंगे? ए बी सी ट्राइंगल का. तो इनके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? इक्वल बाय द थ्योरम. So we will first prove triangle ADB and ADC equal. So for that, let us have AD is equal to AD because it is a part of both the triangles. So we will write AD is equal to AD common. Then we have angle ADB is equal to angle ADC, each 90. Each 90 degree. Also BD is equal to DC given to us. So for this we'll write given. So which rule we can write which rule? This AD is a side, this is the angle, and this is the side. And in the figure also, if you'll see that this angle is touching those two sides which we have included, AD and BD. AD और BD दोनों को वो एंगल जो हमने लिया है वो टच कर रहा है. मीन्स एंगल इज लाइंग बिटवीन द टू साइड्स. तो हमारा जो रूल है वो क्या बन सकता है? देयरफॉर बाय SAS triangle ADB is congruent to triangle ADC. So this implies angle ABD, or we can say angle B is equal to angle C by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Right? Now ये तो थे, अभी जो थे बी और सी वो दो छोटी ट्राइंगल्स के हिस्से थे. लेकिन अब हमें क्या कंसिडर करना है? हम थोड़ी देर के लिए परपेंडिकुलर को भूल जाते हैं एंड लेट अस फोकस ऑन आवर मेन ट्राइंगल दैट इज ABC, जिसमें अब हमारे पास बी और सी एंगल इक्वल आ चुके हैं, हमने प्रूव कर दिए. So now in triangle ABC, if these two angles are equal, then the sides opposite to the two sides are also equal. So now we will write in triangle ABC, क्योंकि वो जो रूल है वो सिंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, दो पर नहीं. तो हम यहीं पर नहीं बोल सकते, हमें सेपरेटली बताना पड़ेगा. इन ट्राइंगल ABC as angle B is equal to angle C, we'll write proved above. As these two are equal, this implies तो B है तो B के अपोजिट कौन होगा? AC, और C के अपोजिट AB will be equal. रीज़न क्या आएगा?
तो ये हैं साइड्स जो कि एंगल्स के अपोजिट हैं, तो बोलेंगे साइड्स अपोजिट टू equal angles are equal. Equal angles are equal. Like this. So this implies triangle ABC is an isosceles triangle. So I hope the question is clear to you. First of all, we have used the smaller triangles, then we moved on to the bigger one to apply the concept of the two triangles. Now let's move on to question number 3. Now dear students, question number 3 is ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE, CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. So this is the figure. This BE is altitude to AC and CF is altitude to AB, and AB, two equal sides AC and AB, means these two sides are equal and these are perpendiculars, and we need to prove these altitudes equal. BE is equal to CF we need to prove. So dear students, you can understand that figure from here, that in this complete side AB is equal to AC given to us. BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB. We need to prove BE is equal to CF. So two equal sides are given to us, two perpendiculars are given to us, और ये जो altitude है ये हमें equal दिखाने ही आ गया. तो इसके लिए I have made two more figures to make it understand that in triangle ABC, जब मैं ये बीच वाली लाइंस को अगर भूल जाऊँ, ये मेन ट्राइंगल ABC पर अगर हम फोकस करें तो इसमें हमें दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, AB इज़ इक्वल टू AC. तो फ्रॉम द थ्योरम हमें क्या मिल सकता है कि AB के अपोजिट वाला एंगल C एंड AC के अपोजिट वाला एंगल B, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल. सो वी विल राइट इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC. दिस implies angle C is equal to angle B. Angles opposite to equal sides are equal. So from this part, if we'll leave these small triangles, if we'll see this one, we'll get these two angles equal by the theorem. Now from this figure, we are going to take this triangle BFC, in which CF altitude is including, and BEC, in which BE altitude is given. So now if we will prove this red and black triangle, means this one and this triangle congruent, तो उनके corresponding parts BE और CF भी क्या हो जाएंगे, equal by CPCT. So now we need to prove them equal. तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख सकते हैं इन रेड ट्राइंगल यू कैन सी F angle is 90 because CF is perpendicular. In black triangle, I have made both the triangles with different colors to make it more clear to understand. In this F angle is 90, in this E angle is 90. So we can write angle F is equal to E, each 90. Then we have हमारे पास रेड ट्राइंगल का ये वाला एंगल B हमारे पास क्या दे रखा है, इक्वल. किसके, कहाँ से, B इक्वल टू C, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, इस ब्लैक एंगल के इक्वल है. ये हमारे पास आगे दो एंगल्स हो गए. उसके बाद इस एंगल को टच होती हुई ये BC साइड, यू कैन सी इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ द ट्राइंगल्स. मीन्स BCF ट्राइंगल का पार्ट भी है और BCE ट्राइंगल का पार्ट भी है, तभी इसके ऊपर दोनों कलर्स आप देख पा रहे हैं. मीन्स दिस इज़ कॉमन. तो हमारा रूल कौन सा बनेगा, ए. जब हमें रूल बताना होता है तो हमें सिंपल ए के ट्राइंगल को देखना होता है. ए ये वाला एंगल हमने लिया है, देन AS, बिकॉज साइड इज टचिंग ओनली वन एंगल, दोनों को टच नहीं कर रही है. ये जो दो एंगल हमने बनाए हुए हैं, जो हमारे ये कॉमन साइड है, ये सिर्फ इस एंगल को टच कर रही है, इसे नहीं. तो कौन सा रूल बनेगा, AAS रूल. सो लेट अस राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, each 90, it is given to us, they are perpendiculars. Then angle in FC triangle, C angle is there and here angle B is there, proved above. Here we have proved above.
and then BC side is common. ये जो BC side है common, BC is equal to BC, we'll write common. So therefore we can write therefore by AAS, which rule we are applying? AAS, AAS रूल. और AAS क्योंकि ये साइड सिर्फ एक ही एंगल को टच कर रही है, सी को. इसमें आप देख रहे हो बी सी वर्ड आ रहा है, तो सी वर्ड आ रहा है, सी अल्फ़ाबेट है, बी, एफ और ई नहीं है, मीन्स दिस साइड इज टचिंग ओनली दिस एंगल. सो AAS, देयरफॉर बाय AAS triangle BFC is congruent to triangle BEC. This implies the altitude BF from this triangle is equal to altitude BE from this triangle are equal by CPCT, and this is what we have to prove. So I hope, dear students, it is clear to you. The concept of this is very much clear to you. Thank you, my dear students. Try the further questions also once yourself. Thank you.